very basic question starts with the preparation of prelims. यहाँ पर जैसा कि हमने पता किया कि ये 2 सेशंस में कोई भी आपका प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर होता है, एंड अगेन इन दिस टाइम यू हैव मेड इट टू द रैंक 1. तो व्हाट चेंजेस, व्हाट स्ट्रैटेजिक चेंजेस आपने ऐसा किया जिसके कि ये ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है? ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आई थिंक वो प्रीलिम्स वाले स्टेज पे दिखा है, क्योंकि बाकी स्टेजेस के लिए मैंने कभी अपीयर ही नहीं किया था. तो यही अपनी स्ट्रैटेजी रखी थी कि मैं प्रीलिम्स का इम्प्रूव करते रहूँ, जो भी मेरी गलतियाँ हैं मैं उसको इम्प्रूव करते रहूँ, और साथ साथ मैंने मेंस की पढ़ाई छोड़ी नहीं कभी. क्योंकि ये डर था कि एक बार अगर प्रीलिम्स मेरा निकल जाए तो फिर मेंस नहीं रुकना चाहिए. तो आई ऑलवेज केप्ट माई मेंस प्रिपरेशन साइड बाय साइड, एंड प्रीलिम्स पे मैंने बहुत अपनी गलतियाँ ढूंढी, क्या गलतियाँ कर रही हूँ और उस पर वर्क किया. So many people are preparing their examination from the YouTube. तो YouTube ने आपके एग्ज़ाम के लिए क्या रोल प्ले किया होगा? सोशल मीडिया वेबसाइट्स थोड़ी ट्रिकी हो सकती हैं, मतलब वो एल्गोरिदम्स कैन मेस विद आवर माइंड्स ऑल्सो. तो थोड़ा सा बी वेरी केयरफुल अबाउट द पीपल यू आर फॉलोइंग, बिकॉज देन इट बिकम्स एन एको चेम्बर ऑल्सो. Yes. सो इफ़ आई वांटेड अ वेरी ब्रॉड ओवरव्यू कि शुरू करते समय कि क्या 5-6 चीज़ें हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या बुक लिस्ट्स होती हैं, उसके लिए रेफ़र किया था. सिमिलरली जब मेंस शुरू कर रही थी तब एक बार ब्रॉड ओवरव्यू के लिए रेफ़र किया था कि अच्छा क्या क्या करना होता है. एंड सेम फॉर इंटरव्यू, जस्ट to begin with, but I didn't use it a lot to throughout the journey. Okay. तो notes making is again a very crucial part of UPSC examination. Yes. तो इसके लिए notes making में prelims mains के orientation में what was your strategy for the notes making? Across the year एक जो वो newspaper note making की habit होती है, तो वो भी मुझे बहुत help की थी. I always made notes out of newspaper. Okay, great. I took the newspaper very seriously across my 3 years. 3 साल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है न्यूज़पेपर, और हर स्टेज पे अलग माइंडसेट से पढ़ना होता है. प्रीलिम्स के लिए हम कुछ फैक्ट्स ढूंढ रहे होते हैं, मेंस के लिए हम कुछ राइटिंग पॉइंट्स की हाँ ये कुछ इनोवेटिव है. Yes. और इंटरव्यू के लिए कुछ कॉन्वर्सेशन पॉइंट्स की अच्छा दिस इज़ गोइंग ऑन, आई फील दिस, एंड सो हर तरीके का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है हर स्टेज का. 28 मई को प्री है, आप भी उसकी तैयारी कर रहे थे, यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट. सो नाउ व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू दोज एस्पायरेंट्स who have to take exam on 28th May? I would say stay calm for the last 1 week should be focused on staying calm and having so that you can focus. Prelims is all a guessing game. Nobody knows more than 30-35 questions in the paper, but after that 35, how you score marks is the game there. To play that game you need to be very calm, very focused, so that your memory can help you, your intelligence can help you. So just stay calm, shut yourself off social media or any media, and be calm and believe in yourself. मयूर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेशन से स्टार्ट करते हैं चीज को. No, this is not a 1-year journey. This is longer than this. I think I started preparing in a very cursory level, like just knowing the syllabus, getting acquainted with the basic resources. Although this is my first attempt, this is not a 1-year attempt. प्रीलिम्स में सबसे पहले एक तो बात करते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन वाले कुछ सब्जेक्ट्स की. उनके रिगार्डिंग आपने क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखी थी ओवर दिस पास्ट 2 years or 1.5 years of your serious study? Okay, so since I was already working, I had a time crunch. So what I did was my basic strategy was to go for few very quality resources, not hopping on from one resource to another, and taking just the limited resources and going for multiple rounds or revisions. Like I think I have revised Lakshmikant for more than 30 times. So that's I relied much more on revision rather than going for multiple sources. So how did you cover these current affairs? Either it is newspaper resource or some online videos or something like that. The best strategy is that to go for monthly magazines of any coaching institute. It's just I think what is required is just the awareness about the topic. And anyways, if the questions will be asked at very deeper level, then I think most of the candidates won't be able to recall those specific data. So I think a general awareness about the current affairs is good enough, be it from newspaper or from monthly compilation. Before pre, I went for a quick roundup of the annual compilation. Prelims is very soon now. So yes, what you have to say to the young aspirants, those who are going for this exam? Any 2 or 3 quick tips that they need to keep in mind?
Okay, so firstly, there is a preconceived notion that one must attempt a particular number of questions in the prelims. So I think that is not a good strategy to go with. What depends is it should be decided based on a number of factors. For example, number one is the difficulty level of the question paper. That has to be judged on that day itself. And also the accuracy ratio with which they are attempting the questions, because negative markings can also come up. Just be confident and calm, and try to eliminate as many options as possible. Go for multiple rounds of answering the questions, not just one single round.